So today we are discussing some of the questions directly based on NCERT. Class 11th NCERT questions ले रहे हैं school purpose से. And the two questions are given and the information which is required as coordinates of fixed points, foci, vertices, eccentricity, length of major minor axis, length of latus rectum, equation of directrix. So everything is required there. One by one we are discussing the questions. 36x square plus 4y square equals to 144. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसे. So what is that equation? X square divided by 4 plus y square divided by 36 is equals to 1. एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दिस केस a स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज 36, है ना. a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 36. दैट्स अ क्लियर केस ऑफ a लेस देन b. दैट्स अ वर्टिकल ellipse where major axis of that ellipse is y axis and minor axis of that ellipse is x axis. Right? That's a case of a less than b. तो इस केस में जब a और b में रिलेशन की बात की जाएगी, that will be a square is going to be equals to b square 1 minus e square. First of all, you are going to find out the eccentricity of that curve. So it will be 4 by 36 is equals to 1 minus e square. So e square is equals to 1 minus of 1 by 9, 8 by 9, and that e will be equals to 2 root 2 by 3. That is the eccentricity of that curve. Curve की eccentricity आ गई आपको. ठीक. वर्टिकल एलिप्स एक सीधी सी बात है. तो वर्टिकल एलिप्स से major axis is clearly y axis. So if I ask you the length of major axis, so length of major axis is going to be 2b there, and 2b that will be equals to 12. 2 into 6, 12. Length of minor axis, that will be clearly equals to 2a. X axis is the minor axis there, 2a. That will be equals to 2 into 2, that will be 4. ठीक. Yes, fixed points की बात कर लें. Foci of that curve. So foci, those are going to be 0, plus minus BE now. 0, plus minus BE. 0, plus minus value of B, which is 6, into value of E, which is 2 root 2 by 3. Right? Those are the foci, fixed points there. Equation of directrix. Equation of directrix. So directrix की equation अगर हम लिखते हैं, that will be equals to x axis के parallel y is equals to plus minus b by e. So y will be equals to plus minus b is 6 divided by 2 root 2, right? The equation of directrix is coming as plus minus 9 by root 2. ठीक है ना. 9 by root 2 या root 2 से मल्टीप्लाई root 2 से डिवाइड करूंगा, 9 root 2 जैसा भी लिखना है. What is the equation of directrix? Fine.
Length of latus rectum. Length of latus rectum. Just do take care. 2b square by a is the length of latus rectum for a greater than b case. That's the case of b greater than a. Here length of latus rectum is going to be, earlier it was twice of b square by a, now it is twice of a square by b, a square by b. Right? That is the length of latus rectum. Perfect. If I ask you the extremities of the latus rectum, can you tell me the extremities of latus rectum? सारी information जितना भी possible है सब कुछ निकाल लेते हैं. Extremities of the latus rectum. Extremities of the latus rectum passing through the foci, है ना? 0, plus minus 4 root 2. This is the point 0, 4 root 2. 0, minus 4 root 2. राइट यहाँ पे जब कहा जाएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज दैट टोटल लेंथ इज 4/3 टोटल लेंथ इज 4/3 कैन यू टेल मी दिस एक्सट्रीमिटी एस और एस डैश एल एल डैश के कोऑर्डिनेट्स बता दें अच्छा लगेगा व्हाट इज दैट एक्स कोऑर्डिनेट टोटल लेंथ इज कमिंग एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज कमिंग एज 4/3 तो हाफ हो जाएगा जो टोटल एक्स कोऑर्डिनेट की. देखो वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है इसका, वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहने वाला है. क्या रहने वाला है 4 √2. एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 2/3, 4 √2. यस एंड दिस इज गोइंग टू बी minus 2/3, 4 √2. Yes. And exactly in the similar way you can write the extremities for the another latus rectum. जरूरी है ये सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए. ठीक है ना? कैन यू टेल मी दिस ऑल्सो, क्योंकि हम तो अच्छे ढंग से सीखना चाहेंगे. L1 L1 dash. Again y coordinate is fixed, which is minus of 4 √2. So it is going to be x coordinate is positive 2/3 minus 4 √2. It is minus 2/3, minus 4 √2. These are the extremities of the latus rectum. Fine. एक और information. If I ask you about the equation of latus rectum, what is that equation of latus rectum? There is no need to go for any 2 point slope form. Equation of latus rectum अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो latus rectum की equation, latus rectum are nothing but आप देख रहे हैं कि जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, दोज आर द लाइन विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब सॉरी दोज आर द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल है वाई कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट. व्हाट इज दैट वाई कांस्टेंट? वाई इज इक्वल्स टू 4 √2. वाई इक्वल टू 4 √2 एंड दिस वन इज बी हैविंग द इक्वेशन एज वाई इक्वल्स टू minus 4 √2. सारी इंफॉर्मेशन आ गई. Y equals to 4 √2 and this is y equals to minus 4 √2. Those are the equations of latus rectum. And clearly यहाँ पर जब आपने ऑब्जर्व किया, सारी बात करी a less than b, that's a vertical ellipse standard form में, but with a case a less than b. ठीक. Now look for the second one. 4x square plus y square equals to 36. Equation of standard ellipse. 4x square plus 9y square equals to 36. Standard form में ले आया, that will be x square by 9 plus y square by 4 equals to 1. Clearly यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो a square is equals to 9 and b square is equals to 4. A square is 9, b square is equals to 4. That's the case of a greater than b. So first of all we are going to look for eccentricity first. That's going to be horizontal ellipse. Horizontal से मतलब हुआ x axis will become the major axis of that curve and y axis will become the minor axis of that curve. तो सबसे पहले हम कर्व की eccentricity find out कर लेते हैं. Here b square is equals to a square
1 minus e square. So b square is equals to 4, a square is 9, 1 minus e square. Can you tell me the value of e then? E is equals to root 5, whole root 5 3, root 5 by 3. Root 5 by 3. Eccentricity is always going to be a positive value because it is the ratio of distances. Na? Don't say plus minus. It is always a plus value because it is the ratio. Ratio of what? SP upon PM. Distance of moving point from a fixed point and distance of moving point from a fixed line. That ratio is eccentricity. Is equals to root 5 by 3. That is the eccentricity. Fine. Length of major axis. Major axis is x axis and length of major axis की अगर बात करूँगा that's going to be 2a 6 perfect. Length of minor axis which is going to be equals to 2b, that will be equals to 4 minor axis की length. Center of that curve is 0, 0, standard form है ना, x square by a square plus y square by b square equals to 1. Center is 0, 0. Can you tell me the vertices? Vertices, that means extremity of the major axis as well as extremities of minor axis. Yes. 3, 0 minus 3, 0 perfect. 0, 2 0, minus 2 बढ़िया. Fixed point foci of that curve plus minus a, 0 plus minus a, 0 plus minus value of a is 3 into root 5 by 3. So yes, it is plus minus root 5, 0 perfect. Equation of directrix also, we look for the equation of directrix. Y axis के parallel lines हैं, x is equals to constant, x is equals to what? Plus minus a by e. X is equals to plus minus a is 3 divided by e, which is root 5 by 3. So x will be equals to plus minus 9 by root 5. What about the length of latus rectum here? Length of latus rectum. Twice of b square by a. B square is 4 there. 2 into 4, 8 divided by 3. 8 by 3, okay. And here also you can find out the extremities of the latus rectum. Total length of the latus rectum is 8 by 3. Half of that will become 4 by 3. So vertices, yeah, extremity of the latus rectum अगर मैं पूछता हूँ, x coordinate remains fixed, which is root 5 and root 5, 4 by 3, root 5, minus 4 by 3. जितनी information required है उससे ज़्यादा ही हम बता रहे हैं. Minus root 5, 4 by 3 and it is minus root 5, minus 4. बढ़िया. Equation of latus rectum. Latus rectum, that's clearly perpendicular to the axis. Y axis के parallel line, x is constant and x is equals to root 5. X equals to root 5 as well as x equals to minus root 5. Yes, those are the equation of latus rectum. Every information is with you. ठीक.
Now again questions directly from NCERT. Find the equation of ellipse which satisfy, दो questions हैं. First one with vertices given to you as plus minus 6, 0 and foci, those are plus minus 4, 0. If I talk about the first one, vertices as plus minus 6, 0 and foci 4 plus minus 4, 0, clear cut आपको समझ में आता है बात. X axis is becoming the major axis of that ellipse. ठीक है. Vertices are given to you. Vertices are given to you. That means plus minus a comma 0 is been given as plus minus 6 comma 0. You can definitely conclude from this place that value of a is nothing but 6. Perfect. So length of major axis की अगर बात की जाएगी तो that will be equals to 12 2 into a. ठीक है. Fixed points plus minus a comma 0. Those are nothing but plus minus 4 comma 0. A is equals to 4. E is equals to 4 by 6. Value of E is eccentricity, which is 2 by 3. Eccentricity is 2 by 3. Equation of ellipse is required. A is available, E is available. You will have to find out B there. So that you can write the equation as x square by a square plus y square by b square equals to 1. And clearly it is a case of a greater than b. So b square can be written as a square 1 minus a square. Yes, pakka. So b square will be equals to a square 36 1 minus e square 4 by 9. So what is that final value? 20. B square is coming as 20. A square is coming as 36. Equation of ellipse तक की बात कर रहा है वो तो ठीक है. X square by 36 plus y square by 20 equals to 1. Fine. ठीक है ना? Now attempt the second one. Second की बात करेंगे तो 0, plus minus 13. Clear cut hint है आपके लिए कि 0, plus minus 13 and 0, plus minus 5, those are the fixed points. So that is there on the y-axis. Y-axis is becoming the major axis of that curve. That's clearly a case of b greater than a. वो b greater than a वाला केस है, यहीं पर डिस्कस कर ले ज़्यादा बेहतर होगा. So second one 0, plus minus 13. So 0, plus minus 13, 2b is coming as 13 plus 13 26, or b is equals to nothing but 13. Foci, those are 0, plus minus be, which are 0, plus minus 5. So be is equals to 5. Value of e, that will be equals to 5 by 13. E आ गया, B already available है. You can find out the value of A. So what is that value of A you are getting here? A square is coming as 44. 144. Okay. The equation of ellipse is x square upon 144 plus y square upon 169 equals to 1, and equation of ellipse was required there. Easily you are getting that. Now the question is, we have to find out the equation of an ellipse. Equation of ellipse, major axis of that ellipse is on the x-axis, and that ellipse is passing through the point 4, 3 and 6, 2. Ellipse की equation required है. Major axis of on the x-axis, major axis on x-axis. So major axis is on x-axis. Standard equation की बात कर रहा है, x square by a square plus y square by b square equals to 1, with clearly a greater than b, that we are aware of. ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं.
दैट एलिप्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, कैसे यूज करोगे इसका? एलिप्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2, फोर कॉमा थ्री से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 4,3, so 16 by a square plus 9 by b square इक्वल्स टू 1. 4,3 से पास कर रहा है, 4,3 आपने सेटिस्फाई किया. एज वेल एज इट इज पासिंग थ्रू 6,2, 6,2 भी सेटिस्फाई कर दिया आपने. 36 by a square plus 4 by b square is equals to 1. सीधी सी बात है, दो इक्वेशन दो अननोन वाला मामला है, आपको सॉल्व करना है. बोले सर कैसे किया जाए? देखो एक आइडिया ये है, if you take 1 by a square as some t1 and 1 by b square is equals to some t2, right? You will be getting 16 t1 plus 9 t2 equals to 1, fine, and 36 t1 plus 4 t2 equals to 1. You are getting two linear equation in terms of t1 and t2. t1 और t2 के टर्म्स में दो linear equation आ रही है. linear equations तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं आप, तो प्लीज सॉल्व कर दीजिए इसको and just give me the value of t1 and t2. These are the simple two linear equations. 16 t1 plus 9 t2 equals to 1 and 36 t1 plus 4 t2 is also equals to 1. Solve these two equations and give the values of t1 as well as t2. Linear equations है, आसानी से solve करना चाहिए आपको. So on solving these two linear equations, the values which you are getting as t1 is equals to 1 by 52 and t2 is equals to 1 by 13. So t1 की value 1 by 52, so t1 is 1 by 52. So t1 I have taken as 1 by a square. So a square is coming as 52. t2 I have taken as 1 by b square. So b square which we are taking as 13. So yes, equation on ellipse. X square by 52 plus y square by 13 equals to 1. भाई एक सीधी सी बात है कि x axis is the major axis, so x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b is passing through the point 4,3 and 6,2. तो 4,3 और 6,2 आपने सेटिस्फाई किया. अब लीनियर, अब सॉल्व करने की बात आती है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो बेहतर है कि 1 बाय a स्क्वायर को वी हैव टेकन एज t1 एंड 1 बाय b स्क्वायर वी हैव टेकन एज t2. क्लास 10th में आप देखते हैं शायद कुछ ऐसे सवाल लीनियर इक्वेशंस के टर्म्स में आ गया. दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, यू गॉट द वैल्यू ऑफ t1 एज वेल एज t2. t1 t2 आती है, a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया एंड यू आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ठीक, नाउ लुक फॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. 4x square plus 9y square plus 8x plus 36y plus 4 equals to 0. Equation of ellipse, but it's not given directly in the standard form. है ना? Again you have to find out all the relevant information with the ellipse. चाहे वो foci हो, equation of directrix, major axis, minor axis, everything is required. लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको उसको लेकर आना पड़ेगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. आने वाला भी है, देखो कैसे. ऑलरेडी आप पैराबोला में काफी क्वेश्चन सॉल्व किए उस टाइप से. 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. परफेक्ट स्क्वायर में तो हम कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन कैसे? You have to take care that coefficient of x square और y square को हम 1 बना लेंगे.
इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ध्यान से देखिएगा 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड देन +1 सो दैट इट विल बिकम x + 1 होल स्क्वायर। पहले देख लीजिए प्लस 9 यू हैव टेकन कॉमन, y स्क्वायर प्लस 4y परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, क्या ऐड करना चाहिए y स्क्वायर प्लस 4y 4, लेकिन आपने यहां पर एडिशनल आपने ऐड किया दैट इज 4 प्लस एडिशनली आपने यहां पे ऐड किया है 36, आ रही बात समझ में? सो इट विल बी नाउ 4 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पक्का? You'll have to take care, जब भी इस टाइप का सवाल आता है जहाँ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की बात आती है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज 1, मैंने पैराबोला में भी आपको समझाया था, है ना? तो नाउ इट इज 4 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एंड अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस y + 2 होल स्क्वायर divided by 4 is equals to 1, x square by 9 y square by 4 is equals to 1. X plus 1 has been kept as capital X and in place of y plus 2 capital Y has been kept. Now it is a clear cut case of origin shifting. Value of a square here is 9 and value of b square here is 4. Clearly it's a case of a greater than b. As far as eccentricity is concerned, that eccentricity is b square is equals to a square 1 minus e square. Can you tell me the eccentricity here? B, e is coming as b square is 9, sorry, b square is 4, 4 by 9 equals to 1 minus e square, it is √5 by 3. अभी क्या हुआ है कि आपने ये केप्ट x + 1 एस कैपिटल X एंड y + 2 एस कैपिटल Y। अब तक के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे, इन ऑल दोस क्वेश्चंस सेंटर ऑफ दैट कर्व वाज 0,0, बट नाउ इट इज नॉट 0,0, सेंटर विल चेंज नाउ, द सेंटर ऑफ दैट कर्व, है ना? नाउ वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग फैक्ट्स। द सेंटर ऑफ दैट कर्व is 0,0, but for x square by a square plus y square by b square equals to 1, you'll have to take care capital X is 0 and capital Y is equals to 0. So x is equals to -1 and y is equals to -2. So center of that curve becomes -1 comma -2. That is the center of that curve. Center of that curve is not 0, 0. It is capital X 0 and capital Y is 0. अच्छा, what about the equation of major axis? Major axis is x axis because a is greater than b. X axis की equation y 0, but you will have to take care. मनीष सुनिए, equation of major axis की equation x axis is the major axis, x axis तो x axis के लिए y 0, you will have to take care capital Y 0. So capital Y is equals to 0, so y + 2 equals to 0, y equal to -2, right? Similarly, equation of minor axis, is y axis, for y axis x0, capital X0. Length of major axis, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, that will be equals to 2a and that will be equals to 6. Length of minor axis, that will be 2b and that will be equals to
4, right? Fixed points. Plus minus AE comma 0, but you'll have to take care. Plus minus AE comma 0, capital X or capital Y? ठीक, right? And capital Y 0. Minus 1 plus root 5, comma minus 2. Minus 1 minus root 5, comma minus 2. Those are the foci of that curve. Clear? An equation of directrix. Directrix. Y axis के parallel line x equals to, तो capital X equals to plus minus a by, yes, capital X, that means it is x plus 1 is equals to plus minus a, which is 3, divided by root 5 by 3. Right? That is the equation of directrix. ये directrix की equation. What about the length of latus rectum? Length of latus rectum 2b square by a, that will remain fixed. एक्चुअल में क्या हो रहा है, केवल कर्व की शिफ्टिंग हो रही है, कर्व की शिफ्टिंग हो रही है. एक्सेंट्रिसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, एक्सेंट्रिसिटी थोड़ी ना चेंज होगी उससे, और ना ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज होगी, ना ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस चेंज होगी. हाँ, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. समझ रहे हैं इस बात को आप? अभी कैसे हो गया, अभी कैसा हो गया कर्व? इट्स नॉट लाइक कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है. यहाँ पर क्या हो गया, जो मेजर एक्सिस है दैट इज एक्स इक्वल्स टू -1, और जो माइनर एक्सिस है वो, सॉरी, मेजर एक्सिस इज वाई इक्वल टू -2, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और जो माइनर एक्सिस है वो है एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन. शिफ्ट हो गया कर्व. ठीक है. Now the question is, find the equation of ellipse referred to its center whose minor axis is equals to, okay, दोनों सवाल हैं. Find the equation of ellipse referred to its center whose minor axis is equal to distance between the foci and whose latus rectum is 10. क्या बोलते हो? Minor axis referred to its center, find whose minor axis is equals to distance between its foci. अभी यहाँ पे सच गिवन नहीं है, so but we can take a case of a greater than b, standard case x square by a square plus y square by b square equals to 1. And according to the question, length of minor axis, which is nothing but 2b, is equals to what? 2b is equals to whose minor axis is equals to distance between the foci. Foci is के coordinates क्या हुए? a, 0 और minus a, 0. तो what is the distance to AE? As well as latus rectum is given as 10. टू बी स्क्वायर बाय ए इज गिवन एज 10, और आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिक्वायर्ड है. ठीक. बी स्क्वायर इज क्लियरली ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक.
ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को उठा के लिख दिया मैंने बी स्क्वायर, भाई बी इक्वल टू ए, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, b square is a square by 2 into a is equals to 10, right? So value of a 10, बढ़िया, और वैल्यू ऑफ a अगर 10 आ गया तो b square is equals to a square by 2, 100 by 2, 50, खत्म. इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. हाँ, ये बात ठीक है. इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो वी हैव टेकन अ स्टैंडर्ड केस बेस्ड ऑन ए ग्रेटर देन बी. कुछ दिया नहीं है तो वी हैव टेकन हियर एट ए ग्रेटर देन बी. तो माइनर एक्सिस के बीच की जो या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस is equals to distance between the foci, or length of lateral rectum is given and that we have used here. Now the question is, if the angle between the straight lines joining the foci and the ends of the minor axis of the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 is 90 degree, find its eccentricity. Again we will be taking the case of x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b. Angle between the straight lines joining the foci and the ends of the minor axis is given as 90 degree. Right? Check करिए. Angle between the straight lines joining the foci and the ends of the minor axis. This is the end of the minor axis. You can use the second one also. That is been given as 90 degree and you have to find out the eccentricity of that curve. Yes, क्या करने वाले हैं हम? Yes, angle S BS dash is equals to pi by 2. ठीक. At the same time, you can definitely write slope of m1 m2 equals to -1 there. Product of slopes is equals to -1, or as well as you can use Pythagoras theorem also. But ठीक है, यहाँ पे बात बन जाएगी. Unnecessary क्यों डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की जाए. As well as you can apply the concept of focal distance also, but ठीक है. Product of slopes is coming as -1, right? 90 डिग्री का एंगल है ये. So slope of BS y2 minus y1 upon x2 minus x1 into y2 minus y1 upon x2 minus x1 is -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 कर दिया m1 m2 इक्वल्स टू -1. ठीक, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया. बी स्क्वायर इज कमिंग एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर हो गई. राइट, रिक्वायर्ड क्या हमें? यू टू फाइंड आउट द एक्सेंट्रिसिटी. फाइन. That is the relation in A and B in case of A greater than B. Fine.
डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकता था। Right? That is the eccentricity. B square by A square has been replaced by E square. E required था आपको, E is coming as 1 by root 2. ठीक, छोटे छोटे सवाल हैं। So look for the equation of ellipse given as 3x square plus 4y square minus 12x minus 8y plus 4 equals to 0. And again you have to find out all relevant information with this ellipse. सबसे पहली बात है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4y, 4 इक्वल्स टू 0, 3 you have taken common, x स्क्वायर माइनस 4x, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 4 ऐड करना होगा, प्लस 4 you have taken common, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 is equals to this minus 4, 12 has been added more, प्लस 4 has been added. चेक करिए सभी लोग ऐसे ही प्रोसीड कर रहे हैं. इट इज 3 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12, और यू कैन से x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1. ठीक, x माइनस 2 इज कैपिटल X, y माइनस 1 को रखा कैपिटल Y बाय 3. इट्स अ क्लियर केस ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग. ठीक, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज कमिंग एज 4, वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज कमिंग एज 3. क्लियरली इट्स अ केस ऑफ a ग्रेटर देन b, और a ग्रेटर देन b वाला केस है तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेंट्रिसिटी अगेन. Using the same standard formula. Center of that curve is not 0, 0. Center of that curve is going to be x minus 2 equals to 0 as well as y minus 1 equals to 0. Center of that curve is 2, 1. तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 by 1 center of that curve which is 0, 0. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0. It is 2, 1 now. As far as value of eccentricity, it's not going to be affected by shifting of origin. आप ellipse को शिफ्ट करने से, ellipse की origin शिफ्टिंग करने से eccentricity पे कोई चेंज नहीं होने वाला है ना. b square is equals to a square 1 minus e square. What is that value of e you are getting here? 1 by 2 half. ठीक है ना. Okay, plus minus a comma 0, because major axis is clearly a greater than b, major axis is x axis. Here it's not going to be x axis, parallel to x axis. Capital X is plus minus a and capital Y is 0. Capital X, x minus 2 is equals to plus minus a square is 4, a is 2 into e is 1 by 2. X is equals to 2 plus minus 1, capital Y 0, y equal to 1. तो coordinates जब मैं लिखूंगा 2 plus 1, 3, 1 as well as 1, 1. अच्छा, सभी लोगों ने ऐसे लिखा है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस that is equals to 2a and that will be equals to 4.
length of minor axis, that will be 2b, that will be 2 root 3. मेजर एक्सिस की इक्वेशन भी लिख देते हैं यहीं पर. इक्वेशन x axis is the major axis, but x axis is y0, y is capital Y0. It will be a line which is parallel to x axis. So y0, capital Y0, y equals to 1. Equation of minor axis की बात करेंगे तो y axis is capital X0, x is equals to 2. ठीक, और बोलिए. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x is equals to plus minus a by e, that's x minus 2 is equals to plus minus a, which is 2, right? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करेंगे तो x will be equals to 6 and x is equals to minus 2. Length of latus rectum 2b square by a, वो अफेक्ट नहीं होने वाला. सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. You will have to make sure that this coefficient of x and coefficient of y must be 1. ठीक है ना.